Hello and welcome back to SDM classes. As a query of students that was presented to me, today I'm going to take up this topic: how nutrients are replenished in soil, or it can be what are the agricultural processes with the help of which we can bring the fertility of the soil back. See, one of the way of bringing or replenishing the soil is by adding manures and fertilizers. And this is something which is very common. We all know what are manures and fertilizers. In this particular video, I will be explaining to you two basic agricultural processes with the help of which the nutrients in the soil can be restored. But before going to those two types of processes, let me explain you a very simple example about leguminous crops. See, leguminous crops. What is the speciality about leguminous crops? Examples: pea, gram, etc. Mustard and all. They all fall into the category of leguminous crops. Now, why these leguminous crops are so very important? Actually, their roots have special nodules. These are known as root nodules. And inside these root nodules, there is a special bacteria residing inside. The name of the bacteria is Rhizobium. This Rhizobium bacteria is doing a very important and beneficial thing for the soil. What it is doing? Rhizobium is actually converting the atmospheric नाइट्रोजन, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन मिलता है वो इनर्ट होता है. इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. सो ये राइजोबियम इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रेट. दिस नाइट्रेट इज अ सल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड, and this soluble nitrogen compound can be absorbed by the roots of the plants very easily and utilized by the plant. तो नाइट्रेट से एक्चुअली प्लांट्स को क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन. एंड वाई नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज प्लांट विल मैन्युफैक्चर इट्स प्रोटीन with the help of this nitrogen. Now you understood why nitrate, conversion of atmospheric nitrogen into nitrate, is important. And plant cannot do it on its own. So that is why leguminous crops which have these root nodules and have rhizobium bacteria in it plays a very significant role. This process is known as nitrogen fixing. So in other words, we can say rhizobium is carrying out nitrogen fixing process for leguminous crops. So when leguminous crops are grown in the field, they replenish the amount of nitrogen that was depleted from the soil. Now, the two processes which can bring back the nutrients or fertility of the soil. The first one is crop rotation. One of the options the farmers have that they can practice crop rotation. Now, what is this crop rotation? Crop rotation is a practice in which different types of crops, leguminous and non-leguminous, are grown alternately in the same field or soil, is known as crop rotation. Suppose एक farmer के पास एक piece of land है, उसकी field है जहाँ पे वो farming करता है. एक साल के लिए उसने वीट ग्रो किया, और जब उसने पूरे उस सीज़न के लिए वीट ग्रो किया तो जो भी फील्ड में जितना भी सॉइल था, वीट प्लांट्स ने उस सॉइल के अंदर से नाइट्रोजन कंटेंट को यूज़ अप कर लिया. एंड नाउ द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट, विच इज़ very important for plants because they have to manufacture their protein, I told you, so they require nitrogen. तो वीट ने वो सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज़ अप कर लिया एंड नाउ द सॉइल फर्टिलिटी इज़ लॉस्ट. So what can the farmer do? He can practice crop rotation.
वीट इज़ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, इसके रूट नोड्यूल्स के अंदर स्पेशल बैक्टीरिया राइजोबियम नहीं होता है, तो ये नेचुरली रिप्लेनिश नहीं कर सकता, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं कर सकता। तो फार्मर एक ऑप्शन ये कर सकता है कि नेक्स्ट सीजन के लिए वो कोई सा भी लेग्यूमिनस क्रॉप अपनी फील्ड में ग्रो करें। जब वो उस नेक्स्ट सीजन के लिए पूरे टाइम सिर्फ लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करेगा, व्हाट विल हैपन, द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल will be restored, after which in the next season he can again grow wheat crops or any other crops which he wants to grow. So this is the practice of crop rotation, children, the practice in which different types of crops means leguminous crop and non-leguminous crops are grown alternately in the same field or same soil. इसको हम बोलते हैं crop rotation. It has some advantages. First, it improves the fertility of the soil by replenishing it with nitrogen and hence brings about an increase in the production of food grains. And secondly, rotation of crops saves a lot of nitrogenous fertilizer because we know fertilizers are chemicals. Generally हम चाहते नहीं है कि हम फील्ड के अंदर केमिकल स्प्रे करें. So ये जो रोटेशन ऑफ क्रॉप वाली जो प्रैक्टिस है, इट सेव्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर. दिस इज बिकॉज लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन with the help of their nitrogen fixing bacteria, and there is no need to add nitrogenous fertilizer to the soil. So first practice was crop rotation. Second, farmer के पास एक और ऑप्शन होता है mixed cropping. सपोज अगर वो लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट को ऑल्टरनेटली ग्रो नहीं करना चाहता, अलग अलग सीजन में नहीं ग्रो करना चाहता, तो उसके पास एक और ऑप्शन है, उसी सेम फील्ड में वो मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकता है. मिक्स्ड क्रॉपिंग का क्या मतलब है, अगर एक रो में उसने लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करें तो दूसरे रो में नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो कर सकता है. Then again a row of leguminous plants and again a row of non-leguminous plants. Again a row of leguminous and again a row of non-leguminous and so on. That means at the same time in the same field he is growing leguminous and non-leguminous crops at the same time alternatively. Okay, that is known as mixed cropping. ठीक है, तो इससे क्या होएगा, साथ ही साथ में नॉन लेग्यूमिनस प्लांट तो सॉइल के न्यूट्रिएंट को यूज़अप करता जा रहा है, नाइट्रोजन को यूज़अप करता जा रहा है, और वो जो लॉस होता जा रहा है उसको कौन रिकवर कर रहा है, लेग्यूमिनस, जो उसके साथ ऑल्टरनेट रोज में ग्रो कर रहा है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो फार्मर कैन आइदर गो फॉर क्रॉप रोटेशन और ही कैन गो फॉर mixed cropping, and these are the two ways in which the nutrients of the soil can be replenished as well as the crop yield can be enhanced. Thank you so much for watching my video. If you liked this video and if it was beneficial for you, then please click on the like icon, please share it as much as you can, and also please click on the subscribe button so that you can be notified for the next time whenever I put up any new video in my channel. Thank you so much. Have a good day.